हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और हमने प्रॉब्लम नंबर 7 तक का डिस्कशन कर लिया था। इवन दो 8 भी डिस्कस कर लिया था, है ना। तो 8 का सोल्यूशन यहाँ पर सामने आपके जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। दिस सोल्यूशन ऑफ द 8 प्रॉब्लम। ओके, दिस इज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज जो कि डिफरेंशिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो उसका प्रॉब्लम नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या है? वी आर डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज 3 that is on based on differentiability. Okay, so question 9 is asking about the examine uh, in the following function for continuity and differentiability at x is equals to 0, 1 and 2 and 2. So function is defined like this. This is your fx is just equal to minus of x square. Okay, when this x is less or equal to 0, and this is your 5x plus of 4 when x is less or equal to 1 and greater than 0. Okay, and this function is equals to 4x square minus 3x when this x is less than 2 and greater than 1. Okay, and it will be 3x plus 4 when this x is greater or equal to 2. So we have to check the differentiability and continuity at 0, 1 and 2. तो वन बाई वन चेक करते हैं। सबसे पहले जीरो पे बात करो, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। Okay, at x equals to 0, so let us check the continuity first. So for continuity, what we have to show? Limit when x tending to 0 of fx should be equal to the value of the function at 0. तो हम अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे बात करें तो वो हमारे पास क्या है? when x is less or equal to 0 is minus of x square, so if it is minus 0 square, it means it is 0. Okay, so f0 is 0. Now लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, दिस इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एक्स। अब व्हेन एक्स इज लेस देन 0, उसके लिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन होती है। दिस इज लिमिट, दिस इज एक्स टेंडिंग टू 0 minus and function you will take minus of x. So this is the polynomial function. We directly put x is equals to 0 here. You will get 0. So this left hand derivative is 0. Sorry, left hand limit is 0. Okay. Let us find the right hand limit. So it will be limit. This is x tending to 0 plus
ऑफ एक्स। अब इसके लिए जो फंक्शन हमारे पास लेंगे वो ये वाला फंक्शन लेंगे। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो विल हैव फोर फाइव एक्स प्लस फोर, so it will be equal to, this is limit x tending to zero, 0 plus this will be 5x plus of 4, it's just equal to, this is a polynomial, direct put x बराबर 0 here, so you will get 4 here. तो हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है that is not equal to the right hand limit. So since you can say left hand limit is not equal to right hand limit, है ना, और it means limit does not exist. It implies limit does not, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक करा और कॉन्टिन्यूटी से हमें ये पता चल गया दिस इज नॉट not continuous. Yeah, you can say discontinuous at x equals to 0. So this implies it is also not differentiable. ठीक है, फिर हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करने नहीं जाना। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता देन वी हैव go for the differentiability check. Okay, so at x is equals to 0 we have checked at x is equals to 1. तो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी similarly, when limit, you have to calculate limit extending to 1 of the function f(x), it should be equal to the value of the function at 1. अब बताइए f1 की वैल्यू क्या आएगी, fn की वैल्यू क्या आएगी। फंक्शन when x is less or equal to 1 is 5x plus 4, so we will put here 5 into 1 और प्लस का 4, you can just say this is your 9। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज 9। अब एलएचएल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन आएगा दिस इज लिमिट, दिस इज एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस हमारे पास जो फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू दिस 5x प्लस 1, 5x प्लस 4, दिस इज 5x प्लस 4। so here we will put x is equal to 1, this is a polynomial function, this is 5 plus 4 and that is equal to 9। okay, नाउ नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इट विल बी लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। अभी इसमें जो फंक्शन हमारा यूज होगा वो यूज होगा दिस वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो दिस के लिए 4x² माइनस 3x ये हमारे पास यूज होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4x²। तो दिस इज योर लिमिट x tending to 1 plus and this is 4, function is 4x² minus 3, ये फंक्शन हमारे पास यूज हो। तो इन द प्लेस ऑफ दिस हमारे पास क्या 4x² माइनस 3x। ओके, तो व्हेन यू जस्ट फॉर इसको जब हम h के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वी विल राइट लाइक दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस विल बी योर in the place of x, you will have to 1 plus h whole up square and this is minus 3, this is 1 plus h, ऐसे लिखा जाता है ना। So we have, this is right hand limit actually, so this is limit h tending to 0 and this is 4 and you have to multiply 1 plus h square and plus the 2 of h and this is minus 3 or this will be minus of 3h। okay, so from here you will have this is limit h tending to 0 and that will be this is 4 plus of 4h square and this is the 4 to the 8 of h
minus of 3 and it will be equal to minus of 3. So from here सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं द प्लेस एच इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो और ये टर्म जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 4 - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज 9 बट राइट हैंड लिमिट इज 1, so it means this limit is does not exist. So left hand limit is uh, uh okay, so left hand limit is तुम्हारे पास 9 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, this implies limit does not exist, and this implies function is not differentiable. Does not exist. This implies given function is not continuous. At x continuous at x is equal to 1. तो continuous नहीं है, तो this implies not differentiable है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। चाहे वो मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन की हो, बट क्वेश्चन इज ठीक है। क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनका आंसर है, उसका आंसर इज रॉन्ग। ओके, तो यू करेक्ट इट, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आइए अब पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। एक्स बराबर 1 पे ना ही डिफरेंशिएबल है और ना ही कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। तो आइए जरा एक्स बराबर 2 पे देखते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू पहले हम 2 पॉइंट पे निकालें। f2 जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, फंक्शन हम क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास 3x+4 है, तो वी विल पुट 3x+4, इट मीन्स 3 × 2 एंड प्लस का 4, इट मीन्स 6+4, इट मीन्स 10। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 इज 10 आ गई है। और अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और 2 माइनस के लिए जो फंक्शन हमारे पास यूज होगा दैट विल बी योर x इज लेस देन 2 के लिए 4x² - 3 विल हैव, दिस इज 4x² - the 3। Okay, so you just put it here. So this is limit, it is a polynomial function, you directly put here, this is 2 minus, uh, अब डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं वैल्यू। किससे पूछ लेते हैं, जो 4x² माइनस का 3x, इन द प्लेस ऑफ x यू कैन पुट दिस इज 2 का स्क्वायर है ना, माइनस का 3 × 2, so you will have this is 2 to the 4, 4 to 4 the 16, 16 minus 6 you will have 10। so left hand limit 10 आ गया। let us talk about the right hand limit। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज 2 प्लस दैट विल बी 3x+4 है ना, और यहाँ पर हम पुट करेंगे दिस इज 3 × 2 + 4 एंड इट विल बी 6+4, इट मीन्स 10। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, left hand limit that equals to right hand limit, and that is equals to 10, and that is equals to value of the function at that point, okay, at the point 2। so this implies given function is continuous at x is equals to 2। so it is continuous at x equals to 2। let us check about the differentiability।
फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिबिलिटी फॉर डिफरेंशिबिलिटी वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। So this is limit h tending to 0. We will write like this. This is 2 minus h minus of f2, है ना, and this is minus of h। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h। उसके लिए हमारे पास 4x² माइनस 3x वाला फंक्शन यूज होगा। तो दिस इज 4 2 माइनस h होल स्क्वायर एंड माइनस का 3 ऑफ 2 माइनस h एंड माइनस f2 की वैल्यू है 10। तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। तो दिस इज ओपन कर लीजिए आप लिमिट, दिस इज h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज 4 एंड ब्रैकेट में 2 to the 4 plus h square and h square and this is minus of 4 of h, okay, and minus का 6 and this is your minus minus plus of 3h minus of 10 divided by minus of, okay, so what you got from here, this will be limit h tending to 0। यहाँ से हम 16 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ऑफ 4h square, 4 for the 16 of h minus the 6 plus the 3h and this is minus of 10, okay, so divided by minus of h। So from here you will have this limit h tending to 0, 16 से 16 आपका 6 and minus 10 cancelled और you will have this is 4h square, this is 4h square और यहाँ पर 16h minus 16h and this is 3, तो 16 में से 3 जाएगा तो minus 13, this will be 13 of h divided by minus of h। तो 13 में से हमारे पास 3 जाएगा तो माइनस 16 में से 3 जाएगा तो 13 माइनस का बचेगा। तो विल टेक लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर h को कॉमन लेते हैं तो विल हैव दिस इज 4h माइनस 13 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। तो ये कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव प्लस ऑफ 13 है ना, माइनस माइनस प्लस ऑफ 13। तो h बराबर हम 0 पुट करेंगे तो विल बी प्लस ऑफ 13। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है दैट इज योर 13, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज 13 फॉर द फंक्शन 4x² minus 3x। so if we just 8, yeah, 13 it will be। ओके, सो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन है हमारे पास वो लेंगे 3x+4 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 लेना है हमको। तो राइट हैंड डेरिवेटिव is defined like this, the limit h tending to 0 f of f of 2 plus h minus of f2 divided by h। Okay, so we have this is limit h tending to 0, value of the function at 2 is 10 and function we have to choose it, this is 5x plus 4, the 5 2 plus h plus 4 or minus of 10, okay। ये था ना, नहीं 3x+4 था, sorry, this was 3x 3x+4, so 3x into 3 2 plus h and plus minus 10 divided by h। So from here you will have this limit h tending to 0, this is 6 plus 3 of h plus of 4 minus 10 divided by h। Okay, so from here we will get the limit is 3, so this is limit h tending to 0 6 4 10 10 minus 10 3, so 3h upon 6 h, with cancel you will get 3।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 13 आपका निकल रहा था। तो इट्स नॉट इक्वल, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, it means function is not differentiable. This implies given function is not differentiable, is not differentiable at x is equals to, at x is equals to x बराबर 2 फंक्शन, x बराबर 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, बट इट वाज कॉन्टिन्यूअस, है ना, वी हैव। तो कॉन्टिन्यूटी तो है बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, 0, 1 एंड 2, जिस पे हमें इस फंक्शन को देखना था कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो सारी चीजें हमने देखी। तो वन, जो 0 एंड 1 पॉइंट मिला उस पर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट जो लास्ट वाला पॉइंट था x बराबर 2, इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेंथ वाली। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम से नंबर 10। तो दे आर आस्किंग अबाउट so that the function, so that the function defined as follows continuous at x is equals to 1, but not differentiable, but not differentiable. Okay, so it is continuous at x is equals to 1 but not differentiable. What is the function is? Function is defined like this: fx is just equal to mod of x minus 1 divided by cos x, cos x 1 upon mod of x minus 4. And this is x is not equals to 1. So that the function is defined as follows: continuous at x is equals to 1, but not differentiable when fx is equals to mod of x minus 1 and cos x 1 upon mod of x minus 1. And value is 0 when x is equals to 1. So it means f1 की वैल्यू क्या है? f1 की f1 की वैल्यू 0, f1 की वैल्यू इज 0 when x is equals to 1. So this is 0. ओके। तो लेट अस सी, पहले तो कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो जो इफेक्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। दिस इज योर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड 1 अपॉन दिस इज योर कॉस एक्स 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो यू कैन जस्ट सी लाइक दिस इज एक्स माइनस 1 एंड दिस इज साइन ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं if you want to। तो लेट अस सी, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल की अगर हम बात करते हैं तो एलएचएल में लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस दिस फंक्शन इज ऑब्वियस, इट विल बी लाइक दिस एंड दिस इज साइन ऑफ 1 अपॉन mod of x। So when this x is less than 1, this will be open with the negative sign. We know that how the modulus is open, है ना, modulus कैसे open? This mod of x minus 1 will be equal to it open like this. It will be positive x minus 1 when this is x is greater or equal to 1, and it will be minus of x minus 1 when x is less than 1. है ना, ऐसे ही तो modulus function open होता है। So here x is we are from negative side because we are approaching from the negative side of 1. So it will be x is tending to 1 minus. So ये open होगा. This is your x minus 1 with the minus sign,
and similarly this is sine of minus 1 upon x. Okay, anyway it doesn't matter. Let us see. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दिस इज लिमिट, you can just change in the h form if you want to. So minus in the place of x we will put 1 minus h. So 1 minus h minus 1, and this is sine of this is minus 1 upon 1 minus h minus. Okay, so we will get like this. Okay, so from here you will have this limit h tending to 0, and this minus plus this will be, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो it will be h sin, यहाँ पर भी 1 by h. अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, when h is tending to 0 then 1 upon h will be tending to infinity, and at infinity what the value of this sign, we don't know, but we know that it will be a finite value. It will be somewhere something with finite value. So here you have when h is tending to 0, this is 0 into some finite value, and you will multiply, you will get 0. Okay, so left hand limit is 0. Similarly, we will find the right hand limit. This is right hand limit is x tending to 1 plus, uh, this is mod of x minus 1, and this is sine of this is 1 upon mod of. Clear? So from here we have just limit this is h tending to 0, and here we can just put now 1 plus h minus 1, and this is sine of this is upon mod of 1 plus h minus. And clearly because we are from right side, it will be open with the positive sign. This will be 0, and this is h on sine 1 upon. Similarly, we get the same, and you will again say this is 0 into finite, and you will get 0. So we have right hand limit, left hand limit, that is 0. So since left hand limit just equal to right hand limit, and that is equal to 0, and that is equal to value of the function at that point when x बराबर हाँ 1 पे चेक करना था, at the x equal to 1. So this implies given function is differentiable at x equals to differentiable at x equals to, you can say what, so sorry sir, not differentiable, continuous. लिमिट जब चेक करते हैं तो कॉन्टिन्यूस, अभी तो डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, है ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है एक्स बराबर 1 पे. लेट अस सी अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात करते हैं हम लोग. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज जस्ट इक्वल टू, this is your f dash at the point 1 is just equal to limit h tending to 0 f of 1 minus h and minus of f1 divided by minus f. So from here this you have this is limit h tending to 0, and in the place you can just put it as mod. So mod of 1 minus h minus 1, this is your sine, this is your 1 upon, this is 1 upon, this is 1 minus h, 1 minus, and a 0 था, and divided by minus h. So from here, this is your limit h tending to 0. We have you h here because modulus is there. This is sine 1 upon h upon minus h. तो अगर हम इसको हम कैंसिल करते हैं तो we'll have this is limit h tending to 0. This is minus sine 1 upon.
ये हमारे पास बचता है। अब यहाँ पर हमारी जो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, दिस वन अपॉन एस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एट इन्फिनिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन वी डोंट नो, so you can say this limit does not exist, this limit does not exist, ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव not exist, so you can say this implies function is not differentiable, not differentiable at x is equals to, is not differentiable at x is equals to 1। तो x बराबर 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो समझ में आ गया है, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका सोल्यूशन आपको करना है। तो शो करना था कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, एक प्रॉब्लम और बची हुई है, लेट अस सी उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, they asking was show that the function defined by, so that the function defined by, so that the function defined by, which is your fx is just equal to x ब्रैकेट में 1 + 1/3 साइन log of x square and f of 0 is just equal to 0, is everywhere continuous, but has no differentiable coefficient at the origin। है ना? तो वही डिफरेंशिबिलिटी आपको चेक करना है प्रॉब्लम के अंदर भी। तो लेट अस सी सी कैसे हम सोल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट हैंड फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, f0 = 0, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, या सिंपली यू कैन से कि हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं व्हेन x टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन हमारे पास का है x, दिस इज योर 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो एक चीज हमें पता है, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, दिस log ऑफ एक्स स्क्वायर, this will be tending to infinity, minus infinity, and it will be tending to minus infinity, then you can say this is sign will oscillate between -1 and 1। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आएगी, बट समवेयर इट इज फाइनाइट वैल्यू बिकॉज इट विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। ठीक है? तो -1 और 1 के बीच में अगर ऑसिलेट करता है तो दिस thing will be a finite, somewhere it will be finite, and because x is multiplied here, so x tending to 0, so you can just say 0 into some finite value and you will get 0। तो जो लिमिट है वो भी 0 एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो सिंस यू कैन से दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx equals to value of the function and that is your 0। so this implies function is continuous at x is equals to 0।
एक्स बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। ये चीज तो हमने निकाल ली यहाँ पर। अब हम डिफरेंशियबिलिटी को देख लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी को जब देखते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव यू कैन जस्ट टेक आई कैन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड दिस विल बी एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। जीरो पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो दिस विल बी माइनस टेन। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो विल हैव दिस इज लिमिट h tending to 0, it will be minus of h, and this will be 1 plus 1 by 3, and this will be sine, and this is log of h square, and minus of 0 because function की वैल्यू 0 पे 0 है, and this is divided by minus of h. तो this and this cancel, minus से minus भी cancel। तो हमारे पास जो बेसिकली लिमिट बची वो बची लिमिट दिस इज योर h टेंडिंग टू 0, दिस इज योर 1 plus 1 by 3 साइन, दिस इज लॉग एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो समझने की चीज है कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ एच स्क्वायर है ना, इट मीन्स दैट यू हैव दिस इज टू टाइम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एच। ओके, सो व्हेन this h is tending to 0, this value to log of mod of h will be tending to minus infinity. If it is tending to minus infinity, then sine of log of 2h oscillates between -1 and 1। ठीक, इसकी हमारी कोई फिक्स वैल्यू या हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू वी कैन नॉट एबल टू फाइंड। ठीक है, तो इन दिस केस दिस implies this limit h tending to 0, this 1 plus 1 upon 3, and this is sine log h square uh, विल बी ऑसिलेट। अगर हम यहाँ पर -1 पुट कर दे साइन की वैल्यू तो 1 - 1/3, इट मीन्स 2/3। एंड अगर हम 1 पुट कर दें तो इट विल बी 1 + 1/4, इट मीन्स 3/4। तो विल बी ऑसिलेट बिटवीन 2/3 and 4 लाइक दिस इज 1 माइनस, अगर हम माइनस रख देते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2/3 आ जाएगा, 1 + 1/3 मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं विल बी 4/3, and this implies limit does not exist, limit does not exist। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस implies given function that is defined like this, given function f(x) is equals to x, which is 1 plus 1/3 1/3 sine log of x square, not differentiable at x is equals to q। x बराबर 0 की फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं, बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, वी हैव चेक इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, so this is the solution of the your exercise 3। I hope so कि आपको समझ में आ गया। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी हैव डन। ये 3 प्रॉब्लम हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी थी, और बाकी 5 हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में 5 और फिर 3, मतलब टोटल 11 प्रॉब्लम्स थी। तो हमने 3 लेक्चर्स में इनको रिकॉर्ड कर दिया है। और आप अगर और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर आप इसे जस्ट पहले वाले जो लेक्चर्स अपलोडेड है वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, और प्लेलिस्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस का प्लेलिस्ट है इसमें सारे लेक्चर्स बाय वन बाय कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ तक भी हमने अभी तक टीचिंग कर रखा है। बाकी और भी लेक्चर्स हम पीरियडिकली हम अपलोड करते रहेंगे डे बाय डे। और आप लोग सीखते रहिए। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क हियर। बाकी जो है मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आप वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं, तो आप कभी मिलते हैं, आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन।
and basically mathematics. Okay, so thank you so much for learning from here this YouTube channel। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ताकि रीच और भी स्टूडेंट तक हम बेनिफिट पहुंचा पाएं जो हमें लेक्चर। और यू नो दैट दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, यहाँ पर कोई आपको चार्जेस नहीं है। और आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम इस जो हम ये पेपर आपको डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज होल पेपर, मतलब हम पूरा एक एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, आपको जो जहाँ पर जरूरत है, जिस लेक्चर की जरूरत है वो आप देखिए, बाकी आप क्लासरूम में पढ़ते ही हैं अपने टीचर से, और वहां पर आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।